Good evening. The screen is visible. Just check. Yeah, this screen is visible. I can see your comments on YouTube also, live comments. But if you have any question, the end of the meeting. Let's begin our first roundtable session about dentistry, and I'm super excited to take it to the Q&A of fixed partial denture. Even though the name of the webinar is XYZ, but I believe it's actually and feasibly the question and answer of fixed partial denture, which we encounter every day in our private practice or be it our commercial practice, right? So I have divided this webinar into a main 6 problem, which you will be facing, or you might have ignoring this, but they are the root cause of whatever the problem you're facing in your FPDs. Okay. Thing I want to tell you that why I choose this topic is that fixed partial denture. Also, this is something that makes you to buy your dream BMW, or be you will in your time in your scooty, right? Because once the fixed partial denture patient is yours, and you get their trust and faith, and you get their love and your trust on you, they will be the patient who will not only attract more patients, but also they will be the someone who are going to be your implant patient in later life, right? Complete denture patient and RPD patient are not important is not I'm saying. All I'm saying is your private practice is makes you rich or in a stable position on the basis of your FPD. When we talk about the prosthodontics, not in another branch, but in prosto it is, because fixed partial denture is something that going to give you the room to make you or to play with so many things, and to give you so many options, so that you may be in wrong or you may be in a right. Okay, even if something goes wrong in the complete denture, it is wrong in every way. Okay, it's not like that you make a mistake or somebody else make a mistake or somebody else does not make a mistake. It's something that is always in there. You might say मुझे पेंचर में यहाँ चुभ रहा है वहां चुभ रहा है, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, कितने भी बार आप ठीक करो, no matter how many times you get it right, the patient keeps on coming back to you. But in fixed partial denture, once the things are right, once the things are in your hand, once the things are controlled, that means the patient is yours forever, right? So that's why I believe that this is something we have to learn, because it's a bread and butter of prosthodontics. So let's start with the first problem, and the first problem is that wrong diagnosis. Now, we have been in the dentistry, or we have been listening to so many webinars, seminars, workshops, people, Instagram reels, YouTube videos, a lot of things. And now that there are very less chances that we go wrong about diagnosis. Diagnosis in the sense that you may be someone who are not good at examination, who are not good at pre-treatment, who are not good at planning, or who are not good at procedure. Okay. Now, why I'm saying this, wrong decision or the wrong diagnosis, which leads you or which puts you in something that no matter how good your hand skills are, but if your diagnosis or the primary treatment plan is not something which you have mastered at a very early stage, there might be a possibility that people you will not get that enough appreciation in the name of the words or in the name of the money. Okay, so the first thing I want to tell you that
what examination I want you, particularly for the FPD, which you have to keep in mind when taking an examination. Now, I'm giving you the crisp and particular tips and tricks for the FPDs. This is something which we have learned for 3 years, and so many people we have been encountered for all. Okay, agar ye kar liya hai, so the life is 90% sorted. Okay, so I'm giving you that tricks. You don't have to read a lot of books or a lot of articles or anything for examination. If you are into the wrong diagnosis, how you can manage this, how you should do a examination part. I want to ask you that examination contains everything. Okay, aapne OMRD field for so many years, and you know that how to examine. Okay, but what to examine in particularly for the FPD? First thing you have to examine is that interocclusal space. Okay, interocclusal space, which means आपकी occlusal level की और लोअर के मिसिंग है तो मिसिंग, या तो फिर रूट कैनाल ट्रीटेड टीथ है तो उसकी। ओके, दोनों की अबटमेंट की, मतलब जो दांत, मतलब टीथ विच इज द नेचुरल टीथ विच इज प्रेजेंट, उसकी हाइट कितनी है। इट शुड be 4 mm for the posterior and 6 mm for the anterior teeth. मसूड़े में से बाहर निकल के आया है, eligible for to get the crown. Okay, ectomy or the crown lengthening or any other procedure which requires a tooth to come out of the socket. Okay, that's the one thing about the examination. Second thing about the examination is that you have to keep in mind that whether you are placing a bridge or whether you are placing a crown, your focus is not just about that particular teeth, but also to the adjacent teeth also. Okay, आसपास के दांत, if adjacent teeth are not good in in what sense? Even if you are not going to, if even if you are not going to take bridge, or even if you are just placing a single crown, still we need an adjacent crown to be healthy with periodontium and with gingival tissue. Okay, if it is not, then there might be a possibility that you have taken a zirconia crown, you have taken an XYZ amount from the patient, but if the teeth are adjacent teeth are not good, they are eventually going to remove the crown by 2 or 3 years. Okay, that's the two things about the examination. Pre-treatment is something that we all know. Now, whenever patient comes to you, whether it's you have done the RCT, somebody else has done the RCT, your BDA done the RCT, or anybody has done the RCT, you have to do FPD things, or you have to make a breach of. Okay, whatever you say or whatever you are going to make, the pre-treatment things, which I'm talking about and route planning. Okay, nothing fancy, nothing nothing else, just a scaling route. I want you to make, you have the scaling, you take a 500 charges for that patient and include in your final bill, but do that before you are starting the FPD crowns. Why I'm saying this? Because once the scaling and route planning is done, you will get to know that patient hygiene is what. Okay, you do a scaling and route planning on Monday, ask the patient to come on Thursday after 4 days for the follow-up, and see if patient oral hygiene is good or not. If the patient oral hygiene is good in 4 days, 4 days in the same, all I'm saying this, if it is good in 4 days, then you will get to know that patient is definitely going to make the crown whichever you are going to give them. Okay, if the patient oral hygiene is not good, patient keep on not eating the habit, patient doing very bad, then if they come 4 दिन के बाद भी अगर आपको मिल to be a zero calculus, but if you encountered one or two the calculus, that means the crown you planning to put is not going to have a lot of good longevity, right? So the pre-treatment is something that you have to do is just a scaling and route planning if it's needed. Scaling always, route planning if it's needed. Then to get the real picture or clear picture about your oral hygiene and also the oral cavity. Okay. The third part is that the planning, how you are going to plan this. You are going to plan this in a way that if the patient is comes to you on Monday for the FPD and patient say that, okay, I want a fixed thing, you explain patient a lot of options, including implant,
and everything. If patient says that they want to go for a fixed bridge or a fixed crown, okay, single fixed breech, definitely for implant if you have explained, and or if you have to give a cap to a root canal treated teeth and you are explaining the patient to everything. Now how you are going to plan for it, I want to tell you that you do not tell patient कि आज आपने अपना दांत कम करा दिया है या उसमें कर दिया है हमने मार्किंग, तो नेक्स्ट वीक आपको पक्का कैप मिल ही जाएगा. Okay, why I'm saying this, because one thing I want to tell you that on the day of the first day examination or whatever the treatment you are going to proceed now, the first is that you talk with the patient. You keep on lowering their expectation about fixed partial denture, okay, because in fixed partial denture we have not a lot of not I'm just saying you are not a lot of shade options than we have in a partial denture. Okay, partial denture in the sense, if we have let's say I have a two material, one is a veneer material lithium disilicate and one is a porcelain fused to metal, that is a PFM. Then if the patient wants a natural teeth or something like a very good looking, then in PFM I have a very limited crown option, okay, very limited shade options. Okay, so you first lower down the expectation and talk with patient. You make a planning with that how they are going to proceed and how you are going to make a crown of it. The planning has to include the number of visit and it also includes the provisionalization part. Okay, it should not be the 2 day things or a 2 week things or a 1 week thing something. Okay, it has to include the provisionalization part. Third thing about the planning is that you have to keep on talking with patient and trying to understand their mental attitude, that what kind of treatment they want and what you are going to proceed. Okay, if you keep on talking to the patient, then you will get to know that this patient is actually already has come to you with the clear mind that is related to the function and not the aesthetic. If the patient's expectation is related to aesthetic, not a function, then you definitely tell the patient that your expectation and the prices and the time and the tooth size and the whatever the limited things you have cannot match together. Okay, and if it's match together, you tell the patient about the whole treatment part कि चलो भैया हमें gingiviectomy, crown lengthening सब करवाना है, everything has to be done and then we can proceed. Okay, now one thing about the crown lengthening I want to tell you about is that crown lengthening has to be done 360 degree. Okay, it cannot be done by just a one part. I agree that there are so many periodontists might be here, but crown lengthening cannot be done in just a mesial part or distal part or buccal or lingual part. I'm not saying it cannot be done. All I'm saying that if you do a 360-degree crown lengthening, there will be a possibility that you can no harm. But if you do a one or other or this one or two surface of the crown in the crown lengthening, you include that in the crown lengthening, there might be a possibility that once when you start preparing the teeth for the FPD, you get to know that this teeth, the level of the crown you are going to place is not equal. Okay, it has to be a equal, and it should not be a more in buccal, less in lingual. It has to be a equal from the eyes of the dentist. Okay, हमें तो दांत एक ही लेवल पर दिखना ही चाहिए. It is looking at same level of the दांत दिख रहा है, then it's the way you can move ahead. Okay, so the planning includes all of this. You lower the expectation about the patient, about the material, about the time limit, and about the being present here. Okay, also lower the expectation of the patient कि patient बोलेंगे कि okay इसमें मुझे इंजेक्शन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, नहीं. You cannot always promise कि इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, LA की जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay, if it's a vital crown, I always prefer you to go for the with LA. No, do not touch the crown or touch the teeth without LA. Okay, always touch the teeth with LA or even at least topical anesthesia. Okay, then you can first problem you can go. Second problem is that the burst, you all have your burst in your hands now. I want you to be very clear about a burr. Okay, जब हम burr select करने जाते हैं,
और जब हम बर मंगवाते हैं किसी के पास और जब हमें बर खरीदने होते हैं, एक कट करने का बर दे दो, एक फिनिशिंग का बर दे दो, ओके दैट्स फाइन। बर यही उसमें डिवाइड होते हैं, कट करने में और फिनिशिंग में, यही दो कैटेगरीज है। बट एट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, जो आपको मैनुअल दिया गया है, आपको बोलते हैं ना कि इसमें से आप सिलेक्ट कर लो मैडम जो आपको, और हम क्या करते हैं भाई, देखो अलग अलग कलर के सब दे दो। तो कभी मैं रेड कलर का कुर्ता पहन के आऊंगी तो रेड बर यूज करूंगी, कभी येलो कलर का टॉप पहन लिया तो येलो बर यूज करूंगी, ओके। हम क्या सोच के करते हैं कि सारे कलर के एक एक दे दो, ओके। बट द थिंग अबाउट बर is that uh, even when I was not in the Prostho PG, I used to be that one also. It's not like you. I was be that one. कि बर सिलेक्ट करने में इतनी कोई माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। सब जो ले रहे हैं वो ले लो, और वरना डेंटल गाय को तो पता ही है, डेंटल मटेरियल वाले भैया को तो पता ही है कि क्या क्या बर चाहिए, है ना। तो कोई उनसे कोई ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, वो खुद दे नहीं हिसाब से। सो वी ट्रस्ट ऑन हिम blindly until I know कि what I exactly want for my patient, okay. I want you to understand the burr. This is the, I'm just giving you the example. There are so many burr companies. You can buy whatever the companies burr, but most of the people I get to know they're using a money burr. Okay. So burr is, you get this kind of ratchet for the burr, right? इतना packet आता है burr का, ठीक है। This is the red burr, right? Okay, we know that there are a three kind of burr: blue, red and yellow. Okay, there are also a black burr also, black band burr also. Okay, जो burr है, जो band है burr के ऊपर, what is that? That is your grid size. Okay, वो क्या बोलता है? Grid size. Okay, so अगर if it is a super coarse or the coarse, then the band color will be the black or the green. If it is a medium, it will be the blue or blue band. And if it is a fine or extra fine, then it would be a red or yellow. If it is a fine, then red. If it is a extra fine, it could be a red or yellow, both of this. Okay. Okay. Now in money burrs, what DIA says, this is the thing I'm talking about. Okay. What DIA says it is a diamond burr. Okay. The diamond is burr is what we want for FPD, not a metal cutting burr or a crown cutting burrs. Okay. DIA means diamond, BURS means burst. Okay, that means it is a diamond burst. Okay. Next thing is that it is said it is X. Whose X? Not my X. Okay, it is a X. What is X? X is an extra fine. बराबर, extra. EX means extra. इधर का EX दिया है. It is a extra. Here is the F. Okay. The F said it is a fine. Okay, so it is an extra fine burr. You have to read it like extra fine burr. Now, what are these number? These number are actually nothing for you. Okay, nothing for you in the sense it is nothing for all of us. It is just for their company's record कि okay 18 नंबर में extra fine में 18 नंबर में हमने इतने बर लाके ये प्रोडक्ट करके इसमें डाल दिए. So it is nothing for us. ये 18 नंबर है या 16 नंबर है. Okay, for our the thing is different. हमें जो देखना है वो different देखना है. Okay, ये हो गया ये बर का. इसके नीचे भी लिखा है पर जो लिखा है दिख नहीं रहा है. So I have put it here. ये वाला आपको मिलता है when you know start choosing a burr from a manual. Okay, so this is a super course, that is a black ring for rapid removal. We know that the course is for a green ring. Standard or medium is at a no ring or the blue ring we use every day. Fine is a red ring and extra fine is your yellow ring. Okay, so ये हो गया हमारा कलर ऑफ द बैंड. ओके, कलर ऑफ द बैंड से क्या पता चलता है हमें? एक तो ये पता चलता है कि अगर ये ब्लू कलर का बैंड है, दैट मींस इट हैज अ स्टैंडर्ड और द मीडियम कटिंग एफिशिएंसी. ओके, कटिंग एफिशिएंसी उसकी कितनी है, ठीक है ना. ये हमें पता चल गया है कि इसकी स्टैंडर्ड कटिंग एफिशिएंसी कितनी है. नाउ सेकंड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये टीएफ और टीआर और वगैरह क्या लिखा है. दैट इज ये जो लिखा है टीएफ टीआर एसएस एससी सीएफ सीरीज. ओके, ये सब क्या लिखा है? दिस ऑल सेज दैट ये टीएफ लिखा है, दैट इज अ टेपर्ड फिशर बर. ओके, टेपर फिशर बर. फिर ये टेपर राउंड बर. ओके, दैट इज टीआर टीएफ टीएफ बर एससी बर. Okay, if it is a SS, that is a small bar. This is a C, that means it's a coarse bar. F is a fine bar. Okay, so F series, which means it's a fine. फाइन क्या है? इसका कटिंग एफिशिएंसी है वो फाइन है. दैट इज द एस इज अ स्मॉल कटिंग एफिशिएंसी, अगर इसकी साइज जो है वो स्मॉल है. ओके, सी इज अ कोर्स एफिशिएंसी. सेम वही चीज अगर इन्होंने नहीं भी लिखी होती तो भी हमें किससे पता
चलती बैंड के कलर से, पर इसके लिए मैं क्या याद रखना पड़ता, ये बैंड के कलर के साथ की जो बात है वो, कि ग्रीन के साथ कोर्स है, मीडियम के साथ ब्लू है, वगैरह वगैरह। ओके, EF is at your extra fine burr, that is your yellow band burr. Okay, now TF12EF क्या लिखा है इसका, टेपर फिशर, 12 को भूल जाइए, EF एक्स्ट्रा फाइन। टेपर फिशर मार्जिन बनाने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा फाइन बर चाहिए तो दिस इज द बर फॉर योर यूज। ओके, second thing about this menu, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, IOS ऐसा करके है, जिसको हमने मर्ज करके ISO कर दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि 173 नंबर ये बर को सारी दुनिया में दिया गया है, सिर्फ मनी नहीं दिया है ऐसा नहीं है। कोई भी जगह पे आप जाओ तो आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे TF12EF का बर चाहिए या मुझे येलो बैंड बर चाहिए। ठीक है, ये किन लोगों के लिए है, जो लोग ग्लोबली सारी चीजें यूज करते हैं। सो दिस ISO नंबर्स इज इट फॉर वोम, एक तो कंपनी जो बना रही है उसके लिए, और दूसरा अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो जो कोई और कंट्री में रहते हैं, जो कोई और डेंटिस्ट्री सिस्टम से काम कर रहे हैं उनके साथ, देन यू कैन कम्युनिकेट विद देम। ओके, अगर मैं बोलूं कि मेरे मामा अमेरिका रहते हैं और मैं उनको बोलूं कि आप मेरे लिए बर का एक बॉक्स लेके आना ना, US में अच्छे बर मिलते हैं तो डेंटल के, तो वो क्या बोलेंगे, कौन से लाओ, मैं बोलूं मणि, तो बोलते हैं यहाँ पे मणि ने वैसा कुछ नहीं मिलता, कुछ और बताओ। तो मैं क्या बताऊंगी, ISO 173 और ISO 171 लेके आइए। ओके, ना उसको स्लैश करके 0.16 लिखा है, अरे सॉरी 0.16 लिखा है, 0.16 यहाँ पे लिखा है, 0.21, 0.18, ये सब क्या लिखा है, ये सब फाइननेस ऑफ द बर है। ओके, 0.16 का मतलब है 1.6। ओके, 1.6 माइक्रोन मीटर इसकी, उसका एक एक जो ये बर बनने में जो एक एक डायमंड की जो ग्रीड साइज लगती है वो 0.16 और 1.6 माइक्रोमीटर जितनी लगती है। ओके, यू अंडरस्टैंड, दिस इज द व्हाट द मैनुअल ऑफ द बर लुक्स लाइक। ओके, तो कुछ भी करके कुछ भी नहीं उठा लेना है बर सिलेक्ट करने में। ये 11, 12, 13, 14 नंबर पे कोई ध्यान नहीं देना है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए TF, TR, SSC, FC, FEF वो सीरीज है, हमारे लिए कलर कोडिंग है, हमारे लिए TF, TR है, हमारे लिए ISO नंबर्स है, हमारे लिए अंदर की फाइन ग्रिड्स है। ओके, जितना ये कम होगा, दैट मीन्स 0.18 से 0.16 से 0.18 कम है, 0.14 से 0.16 कम है, जितना ग्रिड साइज में कम होगा उतनी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ओके, उतना क्राउन कटिंग अच्छा मिलेगा आपको, फिनिशिंग अच्छा मिलेगा। ओके, दैट डजंट मीन कि आप उसके अलावा के उससे क्राउन कटिंग नहीं कर सकते। ओके, क्या फर्क पड़ता है, इफ आई टेक अ ISO 173 एंड ISO 173 08 और 014, क्या फर्क पड़ता है इन दोनों में, फर्क ये पड़ता है, अदर देन द TF, ये तो TF है, अगर TF ना भी हो, TR हो, तो भी फर्क ये पड़ता है कि इन दोनों में ऑल्सो क्या बोलते हैं, इसकी जो ग्रीड है, मतलब जो कटिंग एफिशिएंसी है, उसमें अगर मैंने 0.18 वाला बर लिया है तो दैट मीन्स कि मुझे उसके बाद फिनिशिंग बहुत कम करना है, क्योंकि ये बर ने ना ही सिर्फ कटिंग किया है पर फिनिशिंग भी किया है। अगर मैंने 0.14 का बर लिया है तो दैट मीन्स मुझे फिनिशिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने सिर्फ कटिंग किया है। ओके, you understand what these things, so that way you have to choose your burrs. Okay, it it just not be a blue band के 4 बर दे दो, रेड बैंड के 4 बर दे दो, येलो बैंड के 4 बर दे दो। ओके, ओके, now whenever you are choosing a burr or whenever you are buying the burr, one thing you need to understand that there are definitely you are buying all of the colors burr, no doubt, but which burr you have to use most commonly is, one is a blue band and second one is a red band and not a yellow band. Whenever you have to do a finishing or the finish of the margin of the finishing of the crown or anything, what you have to always do is to make a red band burr. Okay, this is the extra 18F. This is the burr which I use for the finishing, particularly for the TF or TR1. Okay, so this you can use for the finishing. Blue band burr you can choose by your way. ओके, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं ज्यादा फिनिशिंग वाला ब्लू बैंड लूं, ताकि मैं 2 स्ट्रोक मारूं ब्लू बैंड के, उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही स्ट्रोक फिनिशिंग का मारना हो और 3 से 4 स्ट्रोक में क्राउन कटिंग खत्म हो जाए। ओके,
Okay, second thing about is the erotor. Now, erotor is something that you are well aware of how to maintain the erotor, how to be clean the erotor. Okay, okay. One thing about the whenever you are using an erotor, make sure you have a two erotor. One is a small head and one is a larger head. Okay, it should not be a one head for all of the things. Okay, so use a two head erotor. Always clean your burr or always clean your aerator after the use. Okay, with you have to spray it with the oil or you have to clean it with your three-way syringe, but just clean it before you are starting to use for any other way. Okay, now not the hand piece but the aerator position for the teeth. Now we all know the toothbrush is very important for how to cut the crown. Okay, we all know the tooth preparation. We give you the theory lecture for क्या written retention form है या क्या resistance form है, ये सब हमें पता है. Now what we use in clinical way is that whenever you are, अगर आगे के दांत है then it is fine. Okay, if it is a premolar crown or if it is a molar first molar or the upper first molar premolar canine and everything, it's all is fine, you can do. प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हमें अपर 7 प्रिपेयर करना होता है या तो अपर लोअर 8 प्रिपेयर करना होता है. और वो भी उसमें भी डिस्टल मार्जिन प्रॉब्लम आती है जब पेशेंट का माउथ ओपनिंग मैक्सिमम 2 फिंगर या 2.5 फिंगर जितना हो. Okay, how you can compete this problem is that one is that you always use a small head erotor. Okay, second thing about it, whenever you use an erotor small head, what you have to do is to make sure that your hand, this is my upper jaw, okay, this is my last molar. Okay, now I want to prepare from this. Okay, so this is the erotor I'm using. Okay, so if I go this way, the mesial margin, mesial margin, buccal and lingual margin may cut efficiently or may cut a well good. Okay, not so good, but okay, well good. Okay, the difference in distal margin is you, even though patient has a good mouth opening or bad mouth opening, doesn't matter. Whenever you prepare for the crown for the distal margin, always make sure that you move your erotor to the 45-degree angle. This sir, or whenever the burr size is less, there will be a more efficiency you are going to cut for that. Okay, that's the one thing. Don't use a long shank burr. Okay, जिसका जो shank है वो भी बड़ा है, burr size भी बड़ा है, वो distal margin के लिए नहीं use करना है. Whether you have used it for mesial or buccal lingual, they're different, but distal margin के नहीं use करना है. Small head erotor लेना है 45 degree. 45 degree, this is the maxilla. You have to make a erotor in the 45 degree. This is the 90 and this is the 45 degree. Just make sure the patient is sleeping in your, totally sleeping in your chair, and then you make sure that you do a 45 degree handpiece or the position of your erotor. Okay, principle we all know about the tooth preparation. Okay, retention, resistance form, and preservation on everything, all of this. One thing about the principle which is very important for the tooth preparation is not retention resistance form, because you will get one or other way by अगर मैं कोई नया है प्रोस्तो पीजी में और कोई नया है डेंटिस्ट्री में, उसको इतना अच्छा टूथ प्रिपरेशन करना नहीं आता है, और कोई ऐसा है जिसको जो 10 से डिफरेंस कहाँ दिखता है, डेफिनेटली टूथ प्रिपरेशन में तो दिखता ही है. पर सबसे बड़ी चीज क्या तुमको डिस्टिंग्विश करती है बाकी के डेंटिस्ट से, दैट इज यू आर नॉट टचिंग अ सिंगल टाइम टू द एडजेसेंट टीथ. ओके, एक दांत प्रिपेयर कर रहे हो, वही दांत को खुतरना है और उसको ही छोटा करना है. आसपास के कोई दांत को टच तक नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड an exact implementation of your principle of the tooth preparation. Okay, it should not touch the adjacent teeth at all I'm saying. Okay, even though I remember when I was doing a PG, when we used to do tooth preparation on the typhodont, even though a single
single time we touch the adjacent teeth, the whole preparation goes to the cancellation, right? So that should not be done in your FPD at all. You have to be very cautious about not touching the adjacent ground. कुछ नहीं होगा, इनेमल हमारे पास बहुत ज्यादा है, एक बार टच करने से थोड़ा निकल, थोड़ा ज्यादा निकल भी गया तो भी कोई इनेमल को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अभी फर्क नहीं पड़ेगा उस वक्त पे, कल को जाके फर्क नहीं पड़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, और इवन दो उसको फर्क पड़े या ना पड़े, ये सारा ब्लेम हमने जो कैप किए उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। दैट्स द प्रिकॉशन वी टेक, एंड दैट इज व्हाट अ प्रिजर्वेशन ऑफ द एडजेसेंट टीथ और द सॉफ्ट टिश्यू और द अराउंड द टूथ इज व्हाट अबाउट। ओके, सो देयर हैज टू बी अ नो टचिंग ऑफ द एडजेसेंट टीथ। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बी, मेरे से इतना हैंड कंट्रोल नहीं होगा, देन यूज अ वेजिस। वेजिस से टेम्पररी दोनों एडजेसेंट टीथ को थोड़ा दूर कर दो, प्रिपरेशन कर दो, उसके बाद वेजिस निकाल लोगे, दांत अपने आप पास आ जाएंगे। ये कोई परमानेंट वो चीज नहीं है कि जिसमें दांत अलग ही हो जाए। ओके, सो दैट इज, यू कैन, दैट वन थिंग यू कैन डू, यू कैन यूज अ मैट्रिक्स बैंड। इफ इट इज से कि अब मुझे एक साथ एडजेसेंट टीथ नहीं फार है, अगर उसमें भी कट हो रहा है, then you can use a matrix band. Other thing, make sure that all you, whenever you start a preparation with the FPD preparation, make sure you are not moving your head. You use your loops while preparing a teeth. Don't move and just patient के मुंह के अंदर नीचे घुस नहीं जाना है। ओके, अपने लूप्स यूज करो, देखो उसमें से कितना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और अगर नहीं भी, अगर विजिबिलिटी इफ नॉट पॉसिबल, देन चेंज द हेड पोजीशन और द चेयर पोजीशन ऑफ द योर डेंटल चेयर, नॉट योर्स। ओके, वो पोजीशन चेंज करो और पहले अच्छी सी एक पोजीशन ले लो जिसमें आपको लगे कि मुझे डिस्टल मार्जिन तक मुझे अब पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वरना 10 साल में जो प्रैक्टिस कर रहा है वो बंदा, और एक बार जो प्रैक्टिस कर रहा है वो बंदा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा अगर दोनों के दोनों नीचे घुस के ही पेशेंट के मुंह के अंदर से काम कर रहा है तो। Okay, so make sure that you take even a 10 minutes to adjust your all of your instrument at chair position and everything, but at least do it very precautiously and very prior to your starting the treatment. Okay, the last thing is how you are going to check your tooth preparation. You are going to check a tooth preparation with your gauge. Okay, we used to take a gauge. If you cannot, then you can simply take your modeling wax and fold it for a 2 folds. Okay, modeling wax लेना है, उसको गर्म करना है फ्लेम पे, उसको 2 फोल्ड कर देना है, एक और दो, उसके एक के ऊपर एक। ठीक है, उसका एक लेके पेशेंट को बोलना है कि मुंह पे ऊपर रख दे। इफ पेशेंट इज बाइटिंग ऑन दैट वन, एंड अगर आपने जो टूथ प्रिपरेशन किया है वो उसमें थ्रू एंड थ्रू, इफ यू कैन नॉट मेक अ लाइन थ्रू एंड थ्रू, अगर जो वैक्स है वो थ्रू एंड थ्रू नहीं निकल रहा है, या तो वो टेयर अप नहीं हो रहा है, या तो वो हाँ सर, हाँ 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 सर।
I'm coming. Wait a minute. Okay. Okay. Maybe I got just a little disconnected. Let's just get back to this model. Okay. Okay. I hope the screen is visible now again. Sorry for the interruption. The internet goes wrong. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 One thing, another thing about, and the last thing about, rather, I would say, more is that how you are going to check. Okay, you are going. I already told you that you are going to check this with ultimately strip. Sit on the teeth and see if it is a through and through you can visible. It's a not a good sign. If you can see a little thickness about between two teeth, it's a good sign. One thing I want to also add up here is that always do a little extra occlusion reduction rather than and also rather than little extra proximal reduction. Okay, occlusion reduction हमेशा थोड़ा ज्यादा करेंगे, that would be a no harm. Proximal और buccal reduction थोड़ा अगर नहीं, मतलब उसको कम नहीं करना है, but उसको ज्यादा भी नहीं करना है. ठीक है, उसको जितना है उतना ही रखना है, क्योंकि हर बार you are not going to get the enough bulk of the tooth to make a preparation. Okay. The third problem about is that the isolation. The isolation is you are going to do whenever you are going to take a impression. Okay. Nowadays we don't take an impression. If you are somebody who take an impression, or you don't do believe in, you are not much into the scanning and digital dentistry much, then these two or three things you have to keep in mind, and then you are sorted for the impression. The first is that how you are going to do, you are going to use a cord packer. This is the image of the cord packer. You have to purchase this instrument while doing this. Okay, while doing isolation. Okay, so this is how you are going to do. Second thing about this, the cord packer comes in a two part. Okay, one is this this blended or this sharp edge, and the sharp edge cord packer, and the second one is that like a serrated one. Here you can see a serration at the end. This is a serration, this is the smooth one. I prefer a serration one. Okay, serration is you can place your this here you can see the in image. The serration is when you can place immediately or very easily your code into the gingival margin. Alternative about this one is that you can use a gingiform or magic form. They are the gun type of isolation things which you can directly put on around the teeth and keep it for a 5 minutes, and then when you literally three-way syringe से अगर आप पानी करके और when you wash it and remove it, you don't need any other things to make isolation. The gingiva is automatically temporarily isolated or away from the margins. Okay, how what you are going to the importance of isolation is that what you see is what you get. Okay, अगर margin impression में दिख रही है तो margin है, अगर नहीं दिख रही है तो margin नहीं है. Even if you say कि नहीं मैं तो सुप्रा जिंजेवल नहीं, सब जिंजेवल मार्जिन बनाई है, मैं तो एक भी जिंजेवल मार्जिन बनाई है, मैं तो बहुत एस्थेटिक जाना चाहता हूँ, वॉट एवर यू से, अगर मार्जिन मुझे दिखनी चाहिए. मार्जिन हैज टू बी शोन on whenever I take an impression, and to be shown it here on the impression, I have to make it very visible to my naked eye also and to my impression part also. Okay, so that's the important thing I have to do. Another is that the difficulty in special cases you are getting while doing this one is that you are going to be very much in trouble if you are going to use a epinephrine cord packer things for a heart patient. Okay, so you are always have to be very cautious about which material you are going to use for the isolation, in which material you are not going to use for the isolation. Okay. Okay, and the last thing about the isolation is that it has to be a cord and nothing else. The cord has to be nowadays cord comes okay, neated, twisted and tufted से ज्यादा ऊपर twisted है. Always go for a twisted cord. Always go for 000 or 00 or 40. Okay, always do a double isolation, double cord packing. One is for एक cord packing करना है आपको, that goes sub gingival part जो
अगर 1-0 हो तो भी चलेगा, 2-0 हो तो भी चलेगा. Then it has to be, all I'm saying that it has to be a thick one. Okay, when you do a thick one, then you can keep it to the thin one. Okay, वो करना है. उसके बाद you have to make sure that you do isolation with material, or you start placing the cord with the cord packer. The cord packer thing, I believe you have to keep in your clinic or in your private practice also. Okay, you cannot skip this part, because as I say, there is a alternative part, but the alternative is very costly. Okay, so this is the, how much it is for the 300 350 rupees one only things. Okay, so it's not that costly. So you can this one whenever you start isolation, or whenever you are starting your, placing your cord into the this place. The one thing you have to keep in mind that if it is अगर ये ठीक से नहीं लग रहा है, और एक साइड से निकल जा रहा है और एक साइड से हो रहा है, that means आपने जो एक जगह से जो cord packing start किया है, that are not good. It has to be start from the mesial part. Always, ट्राई करना है कि मीजर पार्ट से स्टार्ट कर सके. अगर नहीं हो रहा है, दैट इज वेल एंड गुड. नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन. एक साइड से, मतलब एक सरफेस, वन सरफेस, इधर इट्स मीजर, डिस्टल और लिंगुअल और बक्कल, कोई भी सरफेस हो, तो एक सरफेस अच्छे से यू हैव टू इनसाइड, इन द कॉर्ड हैज टू गो इनसाइड, एंड इट हैज टू बी शोन, इट हैज टू बी विजिबल थ्रू द जिंजाइवा. ओके, इतना पैक करना है, सिर्फ लगाने के लिए लगा नहीं देना. कीप इट फॉर द 5 to 8 minutes. By theoretical book, yes, it says that you have to keep the cord for 5 to 8 minutes. Chill करो, पेशेंट के साथ बातें करो, पेशेंट का मुंह बंद करवा दो, start preparing for the your impression material and everything. Okay, वो सब रेडी कर दीजिए. उसके बाद once you remove the cord, once you start removing the one side of the cord, make sure you are also at the same time you are injecting your impression material also. Okay, that is your light body. Okay, to start removing, take one instrument and start removing from one side, and at the same time start giving your light body impression material into that. Okay, so that last fourth problem about is that your impression. Now impression comes to, nowadays we still prefer FPD with impression. There are so many dentists who prefer even implant impression also, okay, over the digital dentistry or over the scanning. Okay, but if you say that you are not somebody who don't do a impression part, you can skip this part too. The impression thing is that it gives you the exact idea about whether your margin or whether your crown is going to be long term or not. Okay, ये सिर्फ impression से ही तुम पता लगा सकते हो कि ये जो crown जो तुम बिठाने वाले हो, वो कितना टाइम लगेगा बिठाने में, दैट मीन्स सीमेंटेशन करने में. द सेकंड थिंग इज, ये क्राउन कितना चलने वाला है पेशेंट के मुंह में. ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस दैट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मार्जिन अच्छी नहीं है मतलब क्राउन बुरा है. मार्जिन अच्छी नहीं है फिर भी क्राउन चल जाता है. ओके, इवन इफ इट इज अ नाइफ एज मार्जिन, द क्राउन will be a very longer, and even if it's a good chamfer margin, there may be a possibility कि 3 दिन के बाद पेशेंट वापस आ जाएगा, मैडम में निकल गया. Okay, why I'm saying this, that the margin, what I am preferring here is that the margin has to be a uniform. Okay, एक साइड पे नाइफ एज है, एक साइड पे बहुत अच्छी शेम्फर है, एक साइड पे कुछ भी नहीं है, एक साइड पे मैं भूल गई, एक साइड पे मुझे विजिबिलिटी नहीं है, एक साइड मेरा हाथ नहीं जा रहा था. ये सब बहाने से भरी हुई मार्जिन गिव्स यू द मोर नाइटमेयर्स देन एनीथिंग एल्स. अगर नहीं, सिर्फ एक पट्टी बनाई है मार्जिन की नाइफ एज की, देन इट इज ऑल्सो फाइन. बहुत अच्छी मार्जिन बनाए, दैट इट इज ऑल्सो marginal part. This is you will see it in the impression part. Okay, now in impression, what one thing I believe you will get is that the material you are going to take. Okay, which material you are going to take? You are going to take a material of A silicon.
Now, there are two types of material you need to keep in mind, that one is a hydrophobic and one is a hydrophilic. You might have heard about these terms a very long ago, right? एक हाइड्रोफोबिक है और एक हाइड्रोफिलिक है. We know कि हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है something which is a repellent to the water, and hydrophilic philic means something is very lovable to the water. Now, which water we are talking about? We are talking about the saliva. Okay, a material has to be compatible with the saliva. How it is going to be compatible with the saliva? The hydrophobic material is the material which are not going to be very useful for you when there are a lot of saliva. So that उसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे हाइड्रोफोबिक मटेरियल यूज करना है तो मुझे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ड्राई फील्ड चाहिए. ओके, मुझे बहुत अच्छे से आइसोलेशन करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे असिस्टेंट चाहिए, कहीं से भी मुझे रबर डैम भी यूज करना पड़े तो मैं वो भी करूंगी, कुछ भी करूंगी, बट आई हैव टू यूज अ हाइड्रोफोबिक मटेरियल. ओके, in the this picture is that ये पूरी जो पर्पल वाली पिक्चर है, इसमें पूरी सारी जगह पे ब्लड है. बट द कंसर्न हियर इज नॉट नहीं किया, ओके, आइसोलेट नहीं किया इसलिए ब्लड है. दैट डजंट मीन कि अच्छे से मार्जिन नहीं बनी है. मार्जिन शायद बनी भी हो या ना भी बनी हो, बट whatever the concern here is that कि यहाँ पे मार्जिन नहीं आई है, बाकी ओके, दैट्स आर कंसर्न. नॉट दैट कि मार्जिन में ब्लैक रेड, डेफिनेटली रेड आया है तो हमने आइसोलेट नहीं किया अच्छे से, ये करना था, डेफिनेटली सही बात है. बट इन इंप्रेशन पार्ट व्हाट वी आर फोकसिंग हियर इज दैट द इट हैज टू बी व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ हाइड्रोफिलिक मटेरियल, जो हम ए सिलिकॉन यूज करते हैं, जब वीपीएस मटेरियल यूज करते हैं, वीपीएस कैन कम इन हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक आल्सो. ओके, जब भी आप लेने जाओ ऑलवेज प्रीफर फॉर हाइड्रोफिलिक, क्योंकि अगर कोई चीजें सलाइवा के साथ कंपेटेबल है, अगर वो हमें ये नहीं बोल रही कि नहीं भाई हम आप तुम्हें ड्राई फील नहीं दोगे तो हम आपको अच्छी इंप्रेशन नहीं देंगे, so that is something is very friendly to our pocket. Okay, agar hydrophobic material use kar rahe hain, that means a polyether, it is also very costly. It gives you an excellent material stability. Okay, excellent material stability, मतलब वो जितनी अच्छी मार्जिन और जितनी अच्छी इंप्रेशन देगा उतना कोई नहीं देगा. बट अगेन इट्स वेरी कॉस्टली. अगेन इट्स यू हैव टू बी very cautious about the saliva part. Okay, so this is one thing you have to keep in mind. The manipulation has to be by the kneading. How we are going to manage it? I prefer that whatever the a silicone material you have, keep it in the freeze. Okay, keep it in the cold environment and not your dry or you not your this in environment. And the money part, which is most commonly is useful in this one, is that even I'm going you a clinical tips in material part, is that even if you are in a doubt कि मेरी impression अच्छी नहीं आ रही है, always go for the alginate impression. Alginate is absolutely contraindication for taking an FPD impression. But why I'm saying to take alginate impression, if you are impression or if you have not done your proper isolation or the cord packing, then always go for the alginate impression. Just check कि अगर alginate में सही impression आ रही है, so that means this is a good. I can use the A silicon also, because A silicon and C silicon and polyether poly sulfide you cannot use frequently. Okay, एक बार use कर दिया, then you have to discard it. The amount of discard, जो भी तुम जो कचरे में डाल रहे हो मटेरियल, अगर वो डिस्कार्ड करना पड़ रहा है तो तुम्हें ये सोच के मानना है कि तुम अपने 800 रुपीज डाल रहे हो कचरे में डब्बे में. ठीक है, 800 रुपीज ऐसे ही जा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन इनफ टू टेक एन impression. Okay, and if you are say I'm not trained enough or I'm in a hesitation or I'm in a confusion of taking the impression, then I will go for the alginate impression, right? So that's the one thing you have to keep in mind, that it has to be a hydrophilic and hydrophobic material, and the money which is involved in that. The another so many webinars and things say प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई भी नहीं करता. जब तक आप पीजी कर रहे हो तब तक थिंग्स आर गुड. जब तक आप नहीं कर रहे, जब बाहर आ जाते हैं तब क्योंकि nobody has a time, nobody has that things about their कि यहाँ पे हमें ये प्रोविजनलाइजेशन करके क्या करना है, टाइम ज्यादा जाता है, मटेरियल ज्यादा जाता है, पेशेंट आता नहीं है इतनी बार, उसमें उसको पसंद आया नहीं आया, फिर उसका मूड चेंज हो गया, उसका ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो गया. ओके, बिकॉज आवर डेंटिस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द डिजायर ऑफ द पेशेंट. इट शुड नॉट बी डिजायर ऑन द पेशेंट, इट शुड बी on the need of the patient. FPD, CD, RPD, and the whole process has to be need on the patient.
डिजायर थिंग कि क्या है डेंटिस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक डेंटिस्ट्री ही डिजायर थिंग है, ठीक है। और सी फॉर सिर्फ एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, समथिंग दैट यू हैव टू गिव योर 1 or 2 hours टू कन्विंस द पेशेंट फॉर समथिंग बेटर। अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है वो उनके बेटरमेंट के लिए ही है, ठीक है। हमें पसंद है ये होना चाहिए, इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इन सब के लिए नहीं है। Okay, so when the provisionalization you do, first thing you do is that the how many times you are going to take a provisionalization. If it is a non-vital crown, you might not need a provisionalization, but if it's a vital crown, you need a definitely you have to go for the provisionalization. Second thing is, if it is a RC treated teeth and the patient comes to you for FPD, always say the patient के एक week के बाद आना, let the RCT get settled down. अगर कोई कैनाल मिस भी हो गई है तो एक वीक में you will get to know about that कि पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, and then you start your FPD. If you are not going to wait for 1 week for the to start your FPD, then might be in very much trouble, because once the tooth preparation is done and patient comes to you after the कि मुझे अब पेन हो रहा है दांत में, and you are keep on searching कि अरे यार मैंने कहाँ गलती कर दी, अरे यार मैंने क्राउन सही नहीं किया, अरे मैंने ऑक्लूजन सही नहीं किया, अरे मैंने मटेरियल सही नहीं किया, अरे मैंने प्रिपरेशन सही नहीं किया, बट द मेन प्रॉब्लम इज विद द मिसिंग ऑफ द कैनाल। ओके, कैनाल मिस हो गई है, मीजोबक्कल कैनाल मिस हो गई है एंडोडोंटिस्ट से या आपसे या किसी से भी, देन इट दिस माइट बी पॉसिबिलिटी। Which method you are going to use for provisionalization is direct, indirect, or indirect, direct. Okay, we believe you use a indirect direct method, in which you are going to take a putty index for the first patient, take an impression on the first appointment, pour it the cast, and make a putty index of a silicon, the real size and shape of the crown, and then you are going to make a crown out of it. How you are going to make a crown out of it? That you are going to place a you are going to, one thing is that you do hand preparation of that cast. That's the one thing, that's the direct preparation. If you can sorry, that's the indirect preparation. If you cannot do, then you can go for the indirect direct method. Indirect direct method says that you can go for the putty index. Putty index, you have to make a provisional material, that is a pro temp, cool temp, anything. Okay, that material you place it in the putty index and directly place it in the prepared teeth in the mouth. Once you place teeth in the mouth, then you have to just remove it, the extra one. Okay, that's the thing about your putty index, and that's the thing about your provisionalization. Precautions you have to take while doing a provisionalization, there has to be a no extra cement, because you have just done the gingival retraction. Now if you have just taken the impression, your gingiva is still not recovered from your a lot of pressures, so it has to be something that you have to very precautious about, to not take a lot of cement while cementing the provisional crown. Okay, it has to be done with the temporary cement and not a permanent cement. Okay, do not cement your provisional with RMGIC or the resin bonded or the light cure or anything else. Okay, it has to be a simple GIC or simple poly or a zinc phosphate also. Okay, that you can go for that. Another thing about the precautions is that always remember that your temporary gives the exact idea about how your permanent going to get. So okay, once you have given the temporary, you always check for the occlusion, you always trim the margins, you always place it like it is a final crown. Okay, do not treat it as like थोड़े दिन के लिए चला लीजिए ना, कुछ भी है चलेगा चलेगा, don't do it as for the चला लीजिए, because what happen is, if your temporary breaks down in between your final crowns and the preparation time duration, there might be a possibility that patient will not come to you for the next temporary, but patient will be like this only, and they may going to harm the natural teeth or the prepared teeth you have done. Okay, so make sure that you take the temporary as seriously as your final crown. Okay, the clinical trick about the temporary is that whenever you do a temporary crown, always be always give the patient the exact total amount including the temporary crowns. Okay, always give them, because once you given the temporary crowns, क्या होता है, अगर आपके एरिया में 10 डेंटिस्ट है, ओके 10 डेंटिस्ट बहुत सब अच्छी प्रिपरेशन करें, बिकॉज प्रोस्थो एंड एंडो इज अ ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री, सबको आता ही है, अच्छा आता बुरा आता है, पर आता सबको है, ठीक है, तो सब अच्छी करने वाले हैं,
बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? व्हेन यू आर गोइंग टू गिव देम अ टेम्पररी, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव देम अ टेम्पररी एंड यू ट्रीट इट एज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और यू हैव टू बी वेरी precocious, or you have to be very serious about this step. The patient will also feel, you will also get a trust on you that this dentist is very much concerned about my teeth and not just money. Okay, so always read that. Second thing about the provisionalization, about the clinical way, is that when you would do a provisionalization, always do a provisionalization in a bridge way. Okay, like if it is a bridge, you can go further. If it is a one crown, then always make sure that you place the crown, and always fill your putty index, the half of it, more in the buccal, lesser in the lingual. Okay, so that way you place it and then remove it, then you trim the margin, then you if it is somewhere it is a tear up, then you can add a composite and anything. Okay, all of this you can go. The bonding part, if you have to go for the temporaries, we do not prefer more temporaries. We always go for the either 3D printed temporaries for the veneer crowns, or if it is even if it is a temporary, then it has to be not a bonding but just a cemented. Okay, and the last problem about this is that your occlusion. Now, occlusion part is the best part about any prosthodontic, can talk about hours and hours long. Okay. कितने कितने घंटों तक बातें कर सकते हैं ऑक्लूजन के लिए, because we have read a lot of books about occlusion. And the one thing about occlusion you need to understand कि in a practice, अगर तुम्हें occlusion अच्छा चाहिए तो तुम्हें ऑक्लूजन टूल भी अच्छा रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूज योर हैंड और कोई भी चलो अंकल ये पेपर पे दबाओ और बाहर निकल के बोलो अरे भर रेड मार्क्स. ओके, दिस वन थिंग you have to always keep in mind. There are 3 or 4 types of articulating paper in the market is available for from starting from the different micrometers from the CD to your implant processes. Okay, for CD it has to be 100 to 200, for FPD it has to be a 40, and for implant it has to be an 8 micron. Okay, 8 micron, 40 micron, and 100 to 200. Now red and white paper, you are going to you complete denture things, it has to be 100 and 200. You cannot use it for FPD, you have to use this this image. You can see this one is a blue one. You can use a red one also. Red one is for the eccentric, blue one is for the fine enough. Okay, so use a the one thing about articulating paper is use a 40 micron 40. Okay, second thing is use articulating holder. With here is the this one is, you can see the instrument articulating holder. This is the holder. Third thing about this is that you have to take two papers simultaneously placing on the both the side, even if the crown is on the one side or even if the crown is on the just on a single tooth on upper or lower teeth. Okay, it has the crown, the paper has to place on the both the side. It has to be on between the upper and lower, and upper and lower. Okay, so both the side you have to place the paper. Ask the patient to do a tap movements in a just a centric and not a chewing movement. ये नहीं बोलना पेशेंट को कि आप जैसे चबाते हैं वैसे चबाओ, चबाना नहीं है. Okay, it has to be a centric movement first. Centric में जो marks आ रहे हैं उसमें if you are getting this kind of marks, and how you are going to remove the marks, the first focus is at the removing the marks on the non-functional cusp. Okay, नॉन फंक्शनल कस में से सबसे पहले निकालना है, फंक्शनल कस में से बाद में निकालना है. नॉन फंक्शनल कस में से जो निकालेंगे उसमें इफ यू आर गेटिंग दिस वन, दिस इज कॉल्ड अ बुलजाई. ओके, बुलजाई में से अगर ऐसा मार्क दिख रहा है, हियर यू कैन सी, इसमें क्या दिख रहा है, आसपास की जो लाइनिंग है वो डार्क ब्लू है, मतलब कंपेरेटिव टू द सेंटर पार्ट. ओके, द सेंटर पार्ट जो है वो व्हाइट वन है. क्या रिमूव हमें करना है? योर बर्र हैज टू टच दिस व्हाइट पार्ट. Okay, literally it has to touch this white part and you're sorted. You don't need a repeated one. Just यहाँ पे जो बुल्स आइज के बीच का पार्ट है, जो व्हाइट पार्ट दिखा रहा है, उसको अगर आपने रिमूव कर दिया, that means your occlusion is ready. Okay, you don't have to remove all of the part because you are treating a teeth with a natural teeth also. Natural teeth has a periodontium. Natural teeth has a proprioception. It has a connection with the mind. The mind knows कि मुंह कहाँ बंद होता है. आप कुछ नया डाल के मुंह के बंद करने की प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते. ओके, यू हैव टू बी कंपेटेबल. उसके जो पोजीशन जो चल रहा है उसके साथ ही आपको जाना है. यू हैव टू फ्लो विद इट. ओके, उसके अलावा आप अलग से अपना फ्लो नहीं बना सकते. इफ इट इज अलग से फ्लो, देन पेशेंट इज कीप कमिंग बैक टू यू.
and you all know that about, right? So always make sure that you focus on non functional cusp first. Second thing is that you focus on the white part of the bullseye. Third thing about is that you use a articulating holder. Fourth thing about you use a 40 micron for FPD, and fifth thing about is that you use a articulating paper on both the side, even if it requires or not. You have to remove the articulating mark from the exactly opposing teeth and the adjacent teeth of the teeth you have prepared, not from the opposite arch. Okay, वो नहीं करना है, पर रखना दोनों साइड है. ट्रीम एक ही साइड करना है, पर रखना दोनों साइड है. ओके, क्योंकि इफ यू आर प्लेसिंग द आर्टिकुलर पेपर ऑन वन साइड, क्या होगा, पेशेंट का पूरा फोकस वो पेपर पे ही जाएगा. उसको लगेगा कि मुझे यहाँ पे ही अच्छे से मार्क देना है, ये मेरी एग्जाम है. सो दे आर गोइंग टू टेक इट एज अ टास्क. It has to be a no task. It has to be a normal chewing pattern. Also, the sixth thing about that, the taking impression or taking articulation or taking occlusion for the patient, you have to ask the patient to straight, sitting straight, the 90-degree to the floor, and asking the patient to do any of all of this movement. Okay, it has to be a not inclined chair position, or you're not a supine position. It has to be a straight position. Okay, so this is where you have to do. Okay, we are ending this in a 1 hour long session of the Q&A of FPD. This is the ID we can connect, even if it is you are into the position of questioning your FPD, you can ping anytime. I generally do a 2-day workshop for the veneer preparation, and this is the next workshop. It's coming on 11th of June in 2026 in Ahmedabad, Gujarat. We have a lecture and hands-on. Whenever you get a time, just ping me on this Instagram, and I share the details. If you have now any questions, you can ask, or you can ask later also. Let me check if any of you have a question. Okay, in YouTube, I found that somebody asked, what is provisionalization? Okay, provisionalization is the procedure about a provisional, which means a temporarily you are giving them a crown. Okay, आपने दांत प्रिपेयर कर दिया, दांत छोटा कर दिया, आगे पीछे के दांत से अलग दिख रहा है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी अदर ट्रॉमा. ट्रॉमा किससे हो सकता है? पेशेंट ने कुछ खा लिया, पेशेंट ने कुछ, अगर वाइटल टीथ है तो ठंडा पानी कुछ पी लिया, और पेशेंट के आपने ज्यादा प्रिपेयर कर दिया है, अगर डेंटिन एक्सपोजर हो गया, अगर सेंसिटिविटी हो गई, देन टू ये सारी चीजों को कंपेंसेट और ये सारी चीजें होने से बचने के लिए वी गिव अ टेम्पररी क्राउन टू द पेशेंट. टेम्पररी क्राउन कहाँ से बनता है? उसका अलग से मटेरियल आता है. वो मटेरियल से हम ये क्राउन तभी के तभी ऑन द स्पॉट एट द साइड ऑफ द चेयर हम बना सकते हैं. ओके, साइड ऑफ द चेयर हमने बना लिया, उससे क्या होगा कि पेशेंट को ये लगेगा कि ओके, वी हैव गिवन देम अ क्राउन ऑन अ डे. ओके, वही दिन पे हमने उनको क्राउन दे दिया है ऑलरेडी. सेकंड थिंग अबाउट इज दैट कि अगर आपने ये क्राउन दे दिया है तो यू आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग योर फर्दर ट्रॉमा. जब तक आपका फाइनल क्राउन नहीं आ जाता, तब तक आपका जो ये क्राउन आपने प्रोविजनलाइजेशन जो आपने बना के रखा है, इट विल एक्ट एज अ act as a final crown. Okay, so even if it is in a aesthetic area, अगर देखने जाए तो अगर आपने किसी का कनाइन किया है ट्रिम, ओके, छोटा कर दिया है, तो पेशेंट को हंसना होगा, कहीं पे कोई फंक्शन में जाना होगा तो उसे भी शर्म आएगी, उसे भी लगेगा कि यार मेरा फाइनल क्राउन आता है तब तक मैं खुल के नहीं हंसता. ओके, so it also be a bridge between the final crown and your tooth preparation. Okay, so this is the question. Let me get any other question. Okay, what if we have made impression from digital scanning? There is nothing like you cannot make impression, but a digital scanning part requires a three most important thing whenever you scan. Whether you scan or you ask the lab person to come to your clinic or your place and scan, the three things you have to keep in mind, that whichever the scanner you are using, it has its own manual. Okay, so make sure that you read about that manual. Second thing is that whenever you are going to take a scanning, always make sure you start from the occlusal part. Okay, it should not be start from the buccal or lingual part, and it has to be a dry field. It has to not do it should not be just wet field or any of the
salivation or bloods or anything it adds it. But even if it is a scanning part, you have to do isolation very well. Okay, you cannot do a isolation or you cannot take isolation as a something which is not important for scanning. And the third part about the scanning that you have to keep in mind is that whenever you do a scan, make sure you recheck the scan file, make sure you recheck the occlusion file. Okay, the occlusion of the patient has to be a very well. It should not be a change of the occlusion at any point of time. So yeah, you can go for the digital scanning, and there is no way. Okay. Okay. Next question is cutting and crown for vital preparation. Okay. Uh, we are not going to change the tooth preparation or the number of cutting or the the size of the the preparation we are going to cut. We are just going to make sure that whenever you do a vital crown tooth preparation, make sure you give an enough LA. Do not hesitate to give an LA. Okay, आपको भी बात करने में भी वो रख नहीं रखना है कि यार किसी ने अगर पूछ लिया ओके आपको एक बात करना भी ये नहीं रखना है कि पेशेंट को पूछ ले कि अरे मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है। आपने तो बोला था नहीं लगेगा इंजेक्शन, बट यू ऑलवेज सेड कि ये इंजेक्शन आपको कुछ भी करने के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको और आप ये चेयर में से हिलो नहीं और मैं अपना काम शांति से कर सकूं उसी के लिए। ओके, सो अगर आपकी आवाज में ये कॉन्फिडेंस होगा तभी पेशेंट को आपके ऊपर भरोसा आएगा। और ये आवाज में कॉन्फिडेंस कब होता है? जब हमें चीजें पता होती है। हमें ही अगर बैक ऑफ द माइंड ये कंफ्यूजन हो कि यार करूं या ना करूं, ये पेशेंट भाग तो नहीं जाएगा ना, और पेशेंट पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, और पेशेंट ने बहुत ज्यादा पूछ लिया तो मैं बहुत ज्यादा क्या जवाब दूंगी। ओके, so there has to be a no confusion in your back of mind कि ये करना है या नहीं करना है। डेफिनेटली करना है। इवन इफ पेशेंट की वो बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी तो बहुत ज्यादा सहन शक्ति है, मुझे कुछ दर्द नहीं होगा, आप ऐसे ही चालू करो, फिर भी करना है। बिकॉज पेशेंट की सहन शक्ति कुछ भी हो, पर पेशेंट की टंग तो वो ही है जो सबके मुंह में होती है। ओके, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो बाहर जाके सबको ऐसा बोले कि नहीं मैडम का काम तो अच्छा है पर उन्होंने मेरे को बहुत दुखाया। ओके, सो इफ दे से दिस टू टू अदर पीपल एंड दे थिंक और ये मैडम तो बहुत दुखाते हैं, तो वो दोनों पेशेंट भी आपके पास नहीं आने वाला है। बिकॉज आप वो ये नहीं बताएंगे कि मैंने ही ना बोला था कि मत दुखाओ, कि इंजेक्शन मत दो, वो यही बोलेंगे कि मैडम बहुत दुखाया मेरे को करते वक्त। ओके, so always do that, give an LA. Second thing about a vital tooth preparation is that make sure your preparation is in the enamel as possible as you can. Okay, it should not be indenting or it should not be near to the pulp or anything. Okay, and the third thing is always give a provisionalization for the vital tooth, because vital tooth has a tendency to come up. Okay, वो बाहर आते ही रहेंगे अपने सॉकेट में से। अगर आपने प्रिपरेशन के बाद नहीं दिया टेम्पररी तो वो आते रहेगा। तो देयर माइट बी अ सुप्रा ऑक्लूजन व्हेनेवर द क्राउन फाइनल क्राउन हैज कम। तो आपको लगेगा कि अरे यार मैंने प्रिपरेशन इतना अच्छा किया था, ये फाइनल क्राउन नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि आपने टेम्पररी नहीं दिया। जितना भी टाइम लगे आपका फाइनल लाने में, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 वीक, जितना भी टाइम लगे, make sure you give a temporary to the patient. Okay, where we are getting certificate after the, you will get a certificate after the seminar. Antes law is said that जब भी आप tooth preparation, this is a theory part, I believe this webinar is for the a lot of clinical part way, but yeah I give you. Antes law ये बोलता है in normal simple language कि जो भी आपको ब्रीच प्रिपरेशन के लिए टूथ सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, जो भी आपको बीच प्रिपरेशन के लिए टूथ सिलेक्ट करने हैं, वो सारे टूथ को उस तरह से सिलेक्ट कीजिए कि जो आप रिप्लेस करने जा रहे हैं उसके अकेले के ऊपर सारा लोड ना आ जाए। आप टूथ सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो आप 2 दांत और सिलेक्ट करिए, टोटल 3 दांत का ब्रिज बनाइए, ताकि जो मिसिंग टीथ है उस के ऊपर खाने पीने का, चूइंग का, कुछ भी तरह का अकेला लोड वो ही उसके ऊपर ही ना आ जाए, बाकी के दोनों दांत है वो भी आधा आधा डिवाइड कर ले। ओके, दैट्स द सिंपल थिंग अबाउट द एंटेज लो। नाउ व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग एन एंटेज लो इन कंसिडरेशन फॉर द एस्थेटिक पार्ट or the anterior to depression, make sure you take an antes, क्योंकि सबसे ज्यादा किसके पास है रूट इन कॉन्फ़िगरेशन? कनाइन के पास। ओके, कनाइन एंड फर्स्ट मोलर हैज अ हाईएस्ट रूट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अगर इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे एक सेकंड प्री मोलर मेरा मिसिंग है तो मेरे पास सीधा हिसाब है कि मुझे 2 दांत उसके साथ लेने हैं। वन इज मोलर, फर्स्ट मोलर, एंड सेकंड वन इज
फर्स्ट प्रीमोलर, ओके, तो ही मेरा बीच वाला दांत का मैं ब्रिज बना दूंगी। अगर मेरा फर्स्ट मोलर मिसिंग है, ओके, अगर मेरा फर्स्ट मोलर मिसिंग है एंड इफ आई हैव टू मेक अ ब्रिज, और इफ द अगर मेरा आगे वाला प्रीमोलर मतलब जो सेकंड प्रीमोलर है वो इतना अच्छा नहीं है या तो फिर अच्छा है बट आई एम इन अ लिटिल बिट ऑफ अ क्वेश्चन, देन व्हाट आई कैन डू इज दैट मैं दो प्री मोलर लूंगी आगे से और पीछे का एक सेकंड मोलर लूंगी, तो टोटल मैं चार दांत का ब्रीच दे रही हूँ जस्ट टू रिप्लेस वन। वाई फर्स्ट मोलर पे आने वाला है, कौन सा लोड की मैं बात कर रही हूँ, ऑक्लूजन लोड की, जो चूइंग करने वाले हैं वो लोड की मैं बात कर रही हूँ। अगर क्योंकि हम चू पीछे से करते हैं, कट आगे दांत आगे के दांत से करते हैं, तो पीछे वाले दांत से जो चू कर रहे हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर लोड आ भी रहा है, व्हाट हैपन इज दैट कि अगर मैंने वो दांत को प्रिजर्व नहीं किया और वहां का पॉन्टिक जो है वो मैंने अच्छे से नहीं रखा, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मेरे तीन दांत का जो ब्रिज बना है वो थोड़े दिन में ही निकल जाए। ओके, so that what is a antes law. Yeah, I hope it's explained now, and if you need, and I will give you the explanation in that your personal questions about that. How much should we charge for a veneer? Should we charge for a veneer that see, I am into the private practice for many years now, and I believe that to run a successful private practice, your charges has to be at least a twice of whatever the real price. Okay, अगर मैं लैब वाली हूँ, मेरा लैब है और मैं बोलूँ कि मैम मैं अगर आप मुझे पूछते हैं कि मुझे लिथियम डाइसिलिकेट का वीनियर का क्राउन चाहिए और मैं बोलूँ आपको कि हमारे यहाँ जो वीनियर का क्राउन बनता है 1000 का बनता है, देन योर यू नो आपको पेशेंट को क्या बताया कि आप कितने में देंगे, आप एक क्राउन उनको 15 या 16 हजार में देंगे। दैट इज द वन थिंग यू हैव टू, इतना फाइनल का आपका टोटल ज्यादा। ओके, वट एवर द एग्जाम्पल, ओके, 6 कोई भी अमाउंट हो सकता है, बट ऑल आई एम सेइंग दैट इट हैज टू बी अ ट्वाइस at least for you to get a profitable to run a clinic. Okay, अगर ये इक्वल टू इक्वल, मैं ये नहीं बोल रही कि हर बार प्रॉफिट करना है, हर बार पॉसिबल भी नहीं है, कभी कभी हमारा रिलेटिव आ जाता है, कभी कभी कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है कि हम इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख सकते, दैट इज फाइन, मत रखिए, पर जब भी रख रहे हैं तब ये सोच के रखिए, ऐसा नहीं कि इट शुड नॉट बी हैफेजर्ड कि चलो ना भाई 6000 का क्राउन है तो मैं 8000 में कर दूंगा। क्या ले लेंगे आप 8000 में? 6000 तो लैब ले जाएगा, what you are going to take. Okay, so it has to be this way, क्योंकि you are placing a veneer and veneer is something is for the aesthetic purpose. Again I'm saying that veneer is for the desire of the patient is in a willingness of paying you to the money. Okay, so how much you are going is up to you, but this is way a lot of successful private practices works in a market, not in a particular region or not in a particular state, but in every way. अगर आपको ये करना है तो ये रखना ही है, क्योंकि आपके पास वाला ही डेंटिस्ट होगा जो सस्ते में कर देगा, है ना। तो क्या होता है, वो सब्जी वालों के बीच में भी एक तरह का यूनिटी होता है कि एक सब्जी वाले ने बोला कि आलू इतने के मिलेंगे, तो बाकी भी यही बोलते हैं आलू इतने के ही मिलेंगे। हमारे में ये यूनिटी शायद कम भी हो, फिर भी यू हैव टू कीप योर वर्ड्स एंड योर चार्जेस वेरी होल्ड एंड वेरी टाइटली होल्ड, कि हमें ये ना लगे कि भाई हम whatever the material we are going to use, the provisionalization you are going to use, the amount of time and energy you have put together to understand the treatment plan to the patient, it should not go wasted. Okay, okay ma'am, there is a PCM bridge in first and fourth quadrant. There is a metal exposure on the particular teeth and specific point. What reason about the PFM crowns in a metal exposure is that कि first reason ये है कि आपने preparation ठीक नहीं किया है। कौन सी प्रिपरेशन ठीक नहीं किया है? ऑक्लूजन प्रिपरेशन ठीक नहीं किया है। क्या प्रिपरेशन ठीक नहीं किया है? ऑक्लूजन रिडक्शन जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। ठीक है, मार्किंग नहीं लिया आपने, उसके बाद वैक्स स्ट्रिप लेके चेक नहीं किया, गॉज लेके चेक नहीं किया,
और आपको लगा कि दिस ये मुझे नेकेड ऐसे सही लग रहा है, मतलब सही है। ओके आपको लग रहा है कि इतना क्या बोलते हैं। सेकंड थिंग अबाउट द रीजन बिहाइंड मेटल एक्सपोजर इज दैट यू हैव नॉट डन ओरिजिनल दांत जो है उसकी मुझे क्या है, उसकी मुझे हाइट 4 mm रखनी है। ओके कट करके भी 4 mm होनी ही चाहिए। पोस्टीरियर के दांत की हाइट 4 mm फ्रॉम द जिंजर मार्जिन हैज टू बी देयर। ना करो तो भी 4 mm होनी चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी 4 mm नहीं है, फिर भी मैंने पेशेंट को कुछ भी रीजन से पेशेंट को बता दिया कि नहीं नहीं वी कैन गो फॉर द पीएफ ऑक्लूजली जो डिस्टर्बेंस आएगी वो ऐसे ही आएगी। क्या होगा, फर्स्ट थोड़े दिन चला लो, देखते हैं बाद में क्या होता है। ओके थोड़े दिन में पेशेंट जब वापस आता है तब क्राउन में सिरा में निकल गया होता है। ओके एंड द फोर्थ थिंग अबाउट द ऑक्लूजन, यू हैव नॉट चेक द ऑक्लूजन। ये रीजन हो सकता है इसकी वजह से स्पेसिफिक पॉइंट पे आ रहा है। अगर स्पेसिफिक पॉइंट पे मेटल एक्सपोजर हो रहा है देन first thing you have to do is to take up articulating paper, place it in the patient mouth and you have to take an occlusion part. Okay occlusion अगर सही कर रहे हैं और वहां पे जहाँ पे एक्सपोज हो गया है मेटल का वहां पे ही बार बार ब्लू मार्क आ रहा है देन यू हैव टू ट्रिम इट। एंड आज प्रॉब्लम क्या है, पीएफए ट्रिम कर दिया है मेटल को, दैट मीन्स द मेटल जो पूरा दांत है वो क्या हो गया है पूरा, उसकी वो जो दांत है जो मेटल का क्राउन है वो रफ हो गया है। क्या फर्क पड़ता है वो रफनेस से, वो रफनेस से वो जो दांत है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फूड पार्टिकल्स आके बैठने का चांसेस रहता है। दैट मीन्स अगर फूड पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो दांत जो है वो कभी ना कभी वो कैप जो है वो कभी ना कभी निकलेगी भी। ओके निकलेगी भी मतलब वो दांत को लेके भी निकल सकती है। ओके तो द प्रोग्नोसिस विल बी अ वेरी पुअर। इसलिए हम या तो ग्लेज करवा के प्लेस करते हैं या तो फिर मेटल एक्सपोजर जो होता है वो ना अगर क्राउन जो है उसमें अगर रिपीटेडली हो गया है, निकल भी गई है और इसमें ऐसा हो रहा है तो रीसीमेंटेशन करने से पहले उसके ऊपर एक बार ग्लेज करवा दीजिए, क्या बोलते हैं मैन्युअल सिरेमिक लगवा दीजिए। ओके 2 से 4 बार ज्यादा से ज्यादा आप एक ऑक्लूजन चेक कीजिए और उसके बाद क्राउन फिट कीजिए। हाउ टू रिपेयर मेटल एक्सपोजर और सीमेंटेड पीएफएम क्राउन बाय द इंट्राओरल, you have to remain because it's cemented once you cannot remove it intraorally, you have to remain। but मैंने बोला वही same, the more you are going to remove the metal from the pf or the metal crown, the more the margins will be rough, the more the chances of food particles to be attached to it, and there are more chances of you being in trouble in future for the longevity of the patient, longevity of the crown. Which cement is best for zirconia? RMGIC you can use, or other you can use any resin cement or anything. If it is, you are going to cement the zirconia, then it's RMGIC. If you are going to bond the zirconia, then the bonding cements. Okay, the two way you can go for the zirconia. Look for 4-7 full arch breach. Okay, lower full arch breach, and he had a infection in 4-7. The breach was cut and the 4 and removed, and now 4-7 is treated. But how to give process, because removing the full breach is difficult. And while you are in the treatment of it, just make sure dentist or how you are going to proceed for that. Even if it requires you go for the periodontist for the recession हो गया है तो उन सब के लिए। थर्ड थिंग अबाउट दिस दैट अगर आपने ब्रिज कट कर दिया है 4-4 से रिमूव कर दिया है तो नाउ द 4-7 ट्रीट हो गया है, तो अब जब प्रोसेस देंगे तो उसको 4-7 के साथ ज्वाइंट नहीं करेंगे। ओके उसको 4-7 के साथ ज्वाइंट नहीं करेंगे। अगर आपने फुल आर्च ब्रिज दिया है उसमें कोई पार्ट मिसिंग है और वहां से ब्रिज कट करना पड़ रहा है तो ना यू आर इन ट्रबल, क्योंकि अब आप वो ब्रिज रिप्लेस नहीं कर सकते जो दांत की वजह से ब्रिज को तोड़ना पड़ा है, वो दांत को अब बीच में इंक्लूड भी नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इज द लास्ट ऑप्शन यू आर लेफ्ट विथ इज द इम्प्लांट ओनली।
अगर पेशेंट को फिक्स चाहिए देन इट्स इम्प्लांट ओनली, और अगर रिमूवेबल चाहिए देन द आरपीडी। ओके, सो जो दांत में इन्फेक्शन हुआ था उसको अब आप इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यू गिव एटलीस्ट 2 months of time to be very sure about कि अब इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके, फर्स्ट थिंग, डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज दैट यू गेट टू नो कि इन्फेक्शन हुआ कैसे कैसे और क्यों किस चीज से हुआ, वो सब हम देखना है। सेकंड थिंग इज दैट इवन इफ यू आर गोइंग टू गिव देम अ न्यू प्रोसेस, इट शुड नॉट इंक्लूड इन फ्यूचर, यू डोंट गिव अ ब्रीच। ओके, एफपीडी जब हम देते हैं, द वन थिंग अबाउट, तो ब्रीच नहीं देते। इफ इट इज अ मिसिंग टीथ इन बिटवीन तो ब्रीच देना दैट इज फाइन, बट इफ इट इज पूरे दांत में, जब हम फुल माउथ रिहेबिलिटेशन भी करते हैं तब जो दांत लगाते हैं, दांत के ऊपर जो कवर लगाते हैं वो सिंगल लगाते हैं, बिकॉज दैट्स द रूल। यू हैव टू गिव एफपीडी इन अ सिंगल यूनिट फॉर अ सिंगल क्राउन। ओके, एंड यू have to give implant always in a splinted way. Okay, उसको हमेशा जॉइंट देना है। दो अगर है तो उसको जॉइंट देना है। एफपीडी अगर दो दे रहे हैं, पास पास के दांत में भी दो पास पास के दांत में भी दे रहे हैं, तो भी उसको सिंगल यूनिट ही देना है। क्यों? बिकॉज यू नीड अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरल हाइजीन। ओके, फ्लॉस करने के लिए बोलिए पेशेंट को, मेंटेनेंस थेरेपी पर रखिए। ये सब चीजें कब हो पाएगी? जब आपने अननेसेसरीली ब्रीज ना दिया। इफ इट इज नेसेसरी देन इट्स फाइन, इफ इट इज नॉट डू नॉट गिव एफपीडी इन अ ब्रीच। फुल माउथ देना है फिर भी एक दीजिए, चाहे कितना भी टाइम लगे सीमेंटेशन में, चाहे कितना भी टाइम लगे आपको प्रिपेयर करने में, कुछ भी में, बट डू नॉट प्रिफर टू गिव इट इन अ ब्रीच। ओके, अगर आपने 2 दिन 2 दांत के मिसिंग पे एंटेज लो को मान के ब्रीच दिया है, then make sure, अगर 2 मोलर मिसिंग है then make sure you include a 4 teeth, अगर मोलर मिसिंग है then make sure you include a 2 teeth। ओके, ये चीजें ख्याल रखनी है। तो अगर पीछे के 2 मोलर मिसिंग है, 4 7 4 6 एंड 4 5, एक प्री मोलर मोलर तक एंड कर रहा है, इतना बड़ा ब्रिज देना है जो प्रिफर नहीं करता। आइडियली हम 5 यूनिट से ज्यादा ब्रिज देना प्रिफर नहीं करते, 5 यूनिट भी मैक्सिमम बोल रही हूँ। ओके, अब तो नई गाइडलाइन के हिसाब से 3 से ज्यादा नहीं देना है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि गारंटी नहीं देते कि ये चीजें कितनी चलेगी, ओके, चल जाए वेल एंड गुड, नहीं चले नॉट इन आवर हैंड्स, क्योंकि ये एथिकली सही नहीं है। 5 यूनिट तक ब्रीच देना इज नॉट एथिकली राइट। ओके, चाहे कितना भी अच्छे दांत क्यों ना हो, चाहे कितना भी पेशेंट आपको पे करने के लिए रेडी क्यों ना हो, क्योंकि यही पेशेंट घूम फिर के आपके पास आएगा एंड यू विल बी, पेशेंट को कुछ नहीं, वो बोलेगा कि हाँ हाँ मुझे कोई बात नहीं, अगर पेशेंट अच्छा होगा, आपके नसीब अच्छे होंगे, ठीक है, पर आपको अंदर से लगेगा कि यार मेरे को जरूरत नहीं थी ये पेशेंट में पीछे मुड़ के देखने की, फिर भी आज ये पेशेंट के लिए 1 घंटा निकालना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज मैंने पेशेंट की बात मानी, ना ही मैंने अपनी डिग्री की बात मानी। ओके, सो मेक श्योर यू डोंट गिव अ लॉट ऑफ ब्रीजेस ऑन, इवन डोंट, अगर वो ट्रीटमेंट ठीक है सिंगल यूनिटी दीजिए, इवन अगर दे भी दिया है तो क्रॉस आर्ट स्टेबिलाईजेशन, या you I agree you have to I'm saying it, you give it in a single processes. Okay, do not give it in a breach. Okay, I think the questions are done. Dr. Vishwa, if you still have a question, you can ping me on Insta. Or you send me a clinical picture. There might be a possibility that I am understanding the half of your question, because you are just ping me on the Instagram. That is fine. I'll give you the exact. Yeah. Okay. And thank you, being the very. I hope to see connected with you, and I hope to see you all soon. Thank you.